हमारा अगला सत्र है जुडिशरी एक्ट 2047। कहा जाता है कि देश की राजनीति का वर्चस्व उसके न्यायिक दौर से निकलता है। देश का न्याय तंत्र कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में है, जिन्होंने न्याय तंत्र का चेहरा ही बदल दिया है। सूरत लिटरेरी फाउंडेशन द्वारा ऐसे ही महानुभावों को आमंत्रित किया गया है, जो आज हमें उनके अनुभवों और न्याय शास्त्र रूपी ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। आने वाले अगले 25 वर्षों की यात्रा को हम कैसे तय करें, इस पर भी घनिष्ठ चर्चा होगी। इसी सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज के वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हमारे साथ ऑनलाइन से जुड़े हैं हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी। साथ में मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ श्री अश्विनी उपाध्याय जी को और श्री M R वेंकटेश जी को। साथ ही में मैं हमारे स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम इस महान कार्य को आगे लेके जा सके। हमारे स्पॉन्सर्स ONGC, BMS, GAP, लूथरा, हम सब आपके कृतार्थ हैं। धन्यवाद। मैं स्वागत करने के लिए बुलाना चाहती हूँ श्रीमती अपूर्व जी। आप स्वागत करेंगे श्री अश्विनी उपाध्याय जी का। Shri Ashwani Upadhyay ji is currently a practicing lawyer at Supreme Court of India and leader of Bharatiya Janata Party Delhi unit. He is known for his pursuit of various socio-political issues, and we all know him as the PIL man of India. The PIL champion says he wants the fullest implementation of the Constitution with a commitment to gender justice and national integration. Ashwani ji claims his motto is nation first, party next, self last. Ashwani ji has had over 150 PILs to 125 PILs in Supreme Court and 25 in Delhi High Court to his name. Thank you so much, sir, for gracing the occasion. साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री भावेश भाई शाह का, जो कि हमारे नेक्स्ट स्पीकर श्री M R वेंकटेश जी का स्वागत करेंगे। श्री M R वेंकटेश जी, he is an advocate practicing in New Delhi. He passed Chartered Accountancy in 1992 with an All India ranking and was in active practice from 1993 to 2018 as a partner of GSV Associates, Chartered Accountants, Chennai. Mr. Venkatesh has authored books titled Sense, Sensex and Sentiments, and Dr. Manmohan Singh, A Decade of Decay. Thank you, sir, for gracing the occasion. और हम सभी तालियों से हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएं। I'll just introduce him. I'm really sorry. हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी। Shri Ranjan Gogi ji is also the present Rajya Sabha member. He has a dynamic persona who has given us a landmark authorities with his excellent judicial cognition, keeping utmost care of the system, not only legally, but ethically as well. Thank you, sir, for gracing the occasion online with us. And here we start our session. Sir, the stage is all yours. Thank you. सर, श्री रंजन गोगोई जी से आग्रह है कि सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। Wish you all a very good evening. Mr. Upadhyay, Mr. Venkatesh, namaste, namaskar. I thank the organizers for inviting me. I would have liked to come personally, but for various reasons,
I have to be online. And I compliment and congratulate the organizers on choosing this mega topic, what India is going to look like in the next 25 years in 2047, it's 100 years after independence. This session is exclusively devoted to the judicial world in this country, and I will be brief, take about 10-12 minutes of your time. I don't know how I should be describing the Indian judiciary as of today, but certainly in the next 25 years, in 2047, the Indian judiciary cannot be what it is today. Now, so far as the problems plaguing the judiciary is concerned, the first problem I would say is the government, regardless of the political party in power, has always been the largest litigant. A very conservative estimate is that about 50% of court cases, the government is a party. Good governance, which is the aim of every system of law, would be reflected in the number of cases that come to the courts. With 50% of the cases today involving the government, I think there is a huge room here for improvement. Why would a party or why would a person come to court dragging the government as a respondent unless he is aggrieved by some act of governance? This is an area where I think all the stakeholders need to pay special attention. I'm reminded of a case where some confiscation took place under the Customs Act. The confiscation was apparently wrong, and the first forum, Commissioner of Customs, whatever that forum is, decided in favor of the individual, saying that please return the goods. The seizure of the goods was not right. The government, for whatever may be the reason, went in appeal, lost in appeal, went in further appeal, right up to the Supreme Court. Some ego involved, some wrong policy decisions. Eventually, the Supreme Court said, release the goods. By that time, the government released the goods. The government had sold the goods. So the sale proceeds, which was a meager amount, was returned to the owner of the goods. So he had to undergo a second round of litigation to recover the price of the goods. These are unnecessary litigations. Whenever you are talking of the judiciary, you are talking about appointments, judges, collegium, pendency. Nobody is talking about this. Real issues. A significant solution lies in the hands of the government by providing good governance. I'm also reminded of a situation where, a project worth 130 crores went to 190 crores. Some journalists filed a PI. Mr. Ashwani Upadhyay, some journalists filed a PI. And the contractor did the work, but he wouldn't get his money. And when the court ordered for payment of the 190 crores, the escalated amount, the government went in appeal, or the journalist went in appeal. The problem
with our countries and our system is nobody wants to take decisions and responsibilities. For the smallest of things, the attitude is if we are to take decisions, we will be penalized. Parliamentary committees will ask 1,001 questions. Superior officers will call for explanations. Best is don't take any decision. Let the affected party go to court. Let the court decide. We implement the court orders. Is this a way? Administration. I think this is an area where we should concentrate in explaining if we are to find an effective answer to the judiciary's problem. I don't find any major discussion on the necessity of repeal of laws. Okay, the Parliament is repealing some obsolete laws, hundreds, thousands of them. I'm not on that. I'm talking about changes in the day-to-day administration of laws, or rather changes in laws that are responsible for day-to-day administration of justice. The Code of Civil Procedure, the Code of Criminal Procedure. Every decree has to undertake a 3-tier journey right up to the Supreme Court. Preliminary decrees undertake this journey twice. Can we not interrupt some of the principles of the execution of decrees by hearing the suits? This will call for examination of the Code of Civil Procedure. Have we started it? No. Have we thought about it? No. We think about other things. Power of appointment, not things which can make the system work better, namely appropriate judicial reforms. Why are the appeals on the criminal side taking such long time? Trials all over the country more or less takes about, assassin's trial, a murder trial takes about 2 to 3 years. That's long. Okay. It's at the appellate stage that things get started. How many of the appeals pending, say, in a bigger high court like Allahabad have become infectious because the accused is no more? Has an exercise been done? No. We talk about judicial appointments. Do we ever talk about the qualities that are required to deliver justice? Meaning, what are the qualities that should be looked for by selecting and appointing judges? Are we looking for people for whom judgeship is not a job? It's not a 9-to-5 job. It's a passion. It's a commitment. Have the right person in the right place. You don't have to worry about the judge-population ratio. Get people with commitment. And people who have commitment, identify them and protect them. I know of many young people who have come and become judges. They have regretted it because the system could not protect them. Change the work style. Today, unfortunately, many committed judges are resorting to a 9-to-5 rule because they don't see any point in working harder. This is where the danger lies. There are other contentious issues like the Uniform Civil Code. I don't want to talk about it, not in today's event. Article 44 is very much there as a part of the directive principles.
This is not the platform, according to me, for a former Chief Justice to debate on the Uniform Civil Court. A better forum would be Parliament. Of late, there's a storm brewing over the collegium system, the relationship between the political executive and the judiciary. I don't want to comment on it. What calls for, according to me, is astute leadership and statesmanship on both sides. It's not a question of who's superior. It's not a question of who should have the ultimate say in a matter of appointment of judges. The judiciary, as well as the political executive, the judges, as well as the politicians, are all both stakeholders committed to the causes of the Constitution. I'm sure there is no claim of superiority here. If the appointment system needs changes, as the political executive feels, the appropriate place for discussion is elsewhere, not in public platforms where you take pot shots at the judiciary. Similarly, if the judges feel that they have a point of view, the judicial seat is not the proper place from where they should address the issue. It calls for a huge responsibility on both sides, because it is the joint efforts of the political executive and the judges who can solve the problem and ensure what many would like to have as changes in the system of appointment. These are the broad parameters of what I have in mind. I think I should now make my exit, leaving it to Mr. Upadhyay and Mr. Venkatesh to offer their views. I thank the organizers once again. Namaskar, Jai Hind. नमस्ते। सबसे पहले इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जुडिशरी अगले 25 साल में कैसे हो, हमारा जस्टिस सिस्टम कैसे हो 2047, उस पर आपने चर्चा करने का निर्णय लिया। सामान्यतया खासतौर पे दिल्ली में हर विषय पे चर्चा होती है जुडिशरी को छोड़ के। मेरा ये मानना है कि जुडिशरी जस्टिस सिस्टम किसी भी देश के डेवलपमेंट का, कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट का, ओवरऑल डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है। और एक बात और, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जैसे परिवार चलता है उसी तरीके से गांव चलता है, उसी तरीके से राज्य चलता है, उसी तरीके से देश चलता है। तो ये जो भारत का संविधान है, इसमें अंग्रेजों के समय एक सिस्टम था मास्टर सर्वेंट का। मास्टर सर्वेंट के जो टर्म्स था उसको चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक होगी, कुछ उसके सर्वेंट होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि हम लोग कॉलोनियल सिस्टम से चल रहे थे, कॉलोनियल लॉ से चल रहे थे, तो संविधान निर्माताओं ने मास्टर सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट तो बना दिया, लेकिन जहन में, दिमाग में वही चल रहा था मास्टर सर्वेंट वाला। तो जहां सर्वेंट को पब्लिक की सेवा करनी चाहिए थी, वो सर्वेंट पब्लिक से ही सेवा कराता है। जब वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है तो देश कुटुंबकम क्यों नहीं हो सकता? हमारे पूर्वज तो कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, इतनी बड़ी सोच थी। तो हम कह रहे वसुधैव कुटुंबकम बाद में होगा, पहले भारत कुटुंबकम हो जाए। भारत कुटुंबकम कैसे? मान लीजिए एक 100 लोगों का परिवार है,
100 लोगों के परिवार ने यह तय किया कि 95 लोग अपना काम धंधा करेंगे, अपना अलग अलग काम करेंगे, सब मेहनत वाला काम करेंगे, कमाएंगे धमाएंगे। ये 5 आदमियों को काम धंधा नहीं करना। 5 आदमी उन्होंने ड्यूटी बांट दिया। एक आदमी पूरे परिवार के लिए नियम कानून बनाएगा, उसको आज की डेट में उस लेजिस्लेचर कह सकते हैं। एक आदमी को बोला ये अगर परिवार में आपस में कोई विवाद हो जाएगा तो जज का काम करेगा, उसको कह सकते हैं जुडिशरी। तीसरे के एक काम लगा दिया कि भाई घर के लिए तुम दूध ले आना, जो घर की रिक्वायरमेंट है, अनाज खरीद के ले आना, दूध ले आना, सामान ले आना, उसको कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। और चौथे को कह दिया कि भैया तू अगर आपस में लोग कहाँ क्या कर रहे हैं सबकी सूचना तुम करते रहना, उसको कह सकते हैं मीडिया। तो हमारे देश में 4 पिलर है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो इन चारों की ड्यूटी क्या है? वो बाकी के जो 95 हैं उनकी सेवा करना। अब क्या उस दिशा में हमने सोचा, क्या उस दिशा में हमने काम किया? जिन विवादों का समाधान 2 लोग या उसको पंच परमेश्वर कह सकते हैं, 5 लोग जो सामान्य रूप से केवल गुरुकुल में पढ़ के आते थे, वो 5 2 घंटे की बैठक में जिन विवादों का समाधान कर देते थे, उन विवादों का समाधान ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग 30 साल में करते हैं। 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट और 10 साल सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा वाला सिस्टम अच्छा था, जो 5 लोग बैठते थे 2 घंटे की मीटिंग में करके विवाद को ठीक कर देते थे, या पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर लंबे लंबे जजमेंट। अल्टीमेटली आम आदमी को क्या मिला? एक सामान्य सा जजमेंट मिला। दूसरा, अगर मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर ले, मेरे दुकान पे कोई कब्जा कर ले और मुझे अपनी दुकान को वापस लेने में 30 साल लग जाए और अपनी दुकान को लेने में कम से कम 50 लाख रुपए वकीलों पे खर्च करना पड़ जाए और 50 साल के बाद मैं मुकदमा जीत भी जाऊं, तो मेरी जीत कहां हुई? वो दुकान मेरी थी, 30 साल मेरा बर्बाद हुआ, टेंशन मैंने 30 साल झेला, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अंत में क्या मिली? हमें वही दुकान जो मेरी थी। तो जिसने हमारे दुकान पे कब्जा कर रखा था 30 साल तक, उसने हमारी दुकान से अपना शोरूम चलाया, कमाया, वो भी मुकदमा लड़ रहा था, लेकिन वो जो वकील को फीस दे रहा था वो तो दुकान से निकाल रहा था, हमारी दुकान से कमा रहा था और हमें लड़ा रहा था। हम अपनी दुकान के लिए लड़ रहे थे। मेरा ये मानना है कि ये जो जस्टिस सिस्टम है, जो कॉलोनियल जस्टिस सिस्टम है, ये वर्स्ट है। और इसीलिए मैंने एक मुहिम शुरू किया है कि सबसे पहला काम करिए, 1950 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म करिए। जब तक हम अपने इन कॉलोनियल सिस्टम को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस देश में जस्टिस नहीं मिल सकता लोगों को। अगर ये कॉलोनियल सिस्टम अच्छा होता तो किसी अंग्रेज को सजा होती, कॉलोनियल सिस्टम अच्छा होता तो किसी वायसराय को सजा होती। सजा यहाँ सावरकर जी को हुई, भगत सिंह को हुई, सुखदेव को हुई, राजगुरु को हुई। एक्चुअल में 1857 की जो मंगल पांडे की क्रांति थी, उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ लॉ कमीशन बनाया। मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। मैकाले ने बड़ी मेहनत किया तो कानून बना के 1860 में इंडियन पिनल कोड दिया, फिर 1861 में पुलिस एक्ट बना, फिर 1863 में एंडाउमेंट एक्ट बना, सारे मठ मंदिर हमारे कंट्रोल हो गए। अल्टीमेटली ये जो कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, उन्होंने इस देश को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे, डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए थे, लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। इस देश में लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने एक भी कानून नहीं बनाया, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक भी कानून न भारत की संस्कृति के हिसाब से बनाया गया, न भारतीयों के लिए बनाया गया, न भारतीयों को न्याय देने के लिए बनाया गया। लेकिन ये कानून हमारे वेस्टर्न कल्चर्ड
पॉलिटिशियंस को सूट करता था उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने बरकरार रखा। और इस कानून का दुष्परिणाम है, आदर्श स्कैम हुआ, किसी की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, बोफोर्स में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ, CWG में किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ, देवास एंट्रिक्स में कुछ नहीं हुआ, EPF में कुछ नहीं हुआ, फॉर्डर स्कैम में कुछ नहीं हुआ, हर्षद मेहता वाले कांड में कुछ नहीं हुआ, हसन अली वाले में कुछ नहीं हुआ, मोइन कुरैशी में कुछ नहीं हुआ, IPL स्कैम में कुछ नहीं हुआ। ये 10 लाख करोड़ का स्कैम मेरे हाथ में है। 10 लाख करोड़ रुपए भारत का लुट गया, किसी एक व्यक्ति को ना आजीवन कारावास हुआ, न किसी एक व्यक्ति की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। तो इस जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? क्या फायदा हुआ इस कानून का? भारत का टोटल बजट 70 लाख करोड़ का है, सेंटर स्टेट्स का। इसका 14 लाख 20% यानी लगभग 14 लाख करोड़ घूसखोरी, कमीशन खोरी में चला जाता है, दलाली में चला जाता है। अगर हमारा जस्टिस सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा है, करप्शन कम नहीं कर पा रहा है, तो ये बेकार है। अगर ये क्राइम नहीं कम कर पा रहा है तो बेकार है। जस्टिस सिस्टम अगर अच्छा होता है, जिस देश में आप देख लीजिए, वहां पे माओवाद नहीं होता, वहां नक्सलवाद नहीं होता, वहां मजहबी उन्माद इतना नहीं होता, वहां कट्टरवाद इतना नहीं होता, वहां अलगाववाद इतना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जस्टिस सिस्टम अगर अच्छा हो जाए तो इस देश की GDP 2% अपने आप बढ़ जाएगी। उसके लिए किसी FDI की जरूरत नहीं। भारत की GDP 2% बढ़ाने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अच्छे नियम कानून बना के भारत की GDP 2% बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश के व्यापारी ही इस देश की GDP 2% बढ़ा सकते हैं, अगर नियम कानून अच्छा हो जाए, उनके बीच में कोई डिवाइडर बन के ना खड़ा हो जाए, उनको कोई रोकने वाला ना खड़ा हो जाए, उनको टॉर्चर करने वाला ना कोई खड़ा हो जाए, ना परेशान करने वाला खड़ा हो जाए। तो सवाल यह है कि ये होगा कैसे? मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, और हम लोग पहले, मैं मारुति में था तो वहां पे जैपनीज टर्म बहुत यूज करते थे। 5M की प्रोडक्टिविटी तब अच्छी होगी जब आपका 5M अच्छा होगा। 5M का मतलब मैन अच्छा होगा, मशीन अच्छी होगी, आपका मेथड अच्छा होगा, आपके पास मनी अच्छी होगी, और 5वां M क्या है? मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल। करेक्ट, मटेरियल अच्छा होगा। अब मैन अच्छा कैसे हो? मैन अच्छा हो, सब लोग अपने स्वधर्म का पालन करें, भाई भाई आपस में न लड़े, आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। पति पत्नी आपस में न लड़े, आधे मुकदमे ऐसे खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का एक बिस्वा जमीन पर कब्जा न करे, काफी मुकदमे ऐसे कम हो जाएंगे। तो वो कैसे होगा? इस देश में आपको वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। कम से कम 5वीं तक, आप फर्स्ट से लेके 5th तक बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मत बनाइए, उसको इंजीनियर मत बनाइए, उसको कलेक्टर कुछ मत बनाइए। आप फर्स्ट से लेके 5th तक, यानी 5 साल से लेके 10 साल तक पूरे देश में गुरुकुल सिस्टम लागू करिए, वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करिए। अच्छा इंसान हो जाएगा तो किसी की जगह पे कब्जा नहीं करेगा, अपने भाई से नहीं लड़ेगा, पति पत्नी के मुकदमे नहीं होंगे, जो आज की डेट में फैमिली कोर्ट भरी पड़ी हुई है, पति पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, वो कम हो जाएगा। दूसरा, आपको फिर दूसरा M चाहिए, जज अच्छे क्वालिटी के चाहिए। जज अच्छे क्वालिटी के चाहिए तो उनका आपको सिलेबस एक करना पड़ेगा, उनका एग्जाम एक करना पड़ेगा। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में बहुत अंतर है। यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में बहुत अंतर है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज और झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज में बहुत अंतर है। कानून एक है, जज की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। तो समाधान क्या है? आपको इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू करना पड़ेगा। अगर जैसे इंजीनियरिंग का एक एग्जाम हो गया जेई, तो बच्चों के पूरे देश में स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्मिटी आ गई। हमने एनडीए का एक एग्जाम कर दिया कि पूरे देश में सेना के लिए एक एग्जाम होगा एनडीए, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए पूरे देश में एक एग्जाम होगा नीट।
लेकिन हमने इंजीनियरिंग जुडिशरी के लिए एक एग्जाम नहीं किया। और जज और डॉक्टर अगर ये मेरिट वाले नहीं होंगे तो समाज के लिए बड़े हानिकारक होंगे। जज अगर डॉक्टर अच्छी क्वालिटी के नहीं होगा तो किसी की जिंदगी ले लेगा, और जज अच्छी क्वालिटी के नहीं होगा तो वो किसी के साथ अन्याय कर देगा। वो दोषी को बेल दे देगा, निर्दोष को जेल में ठोक देगा। जो दोषी होगा बाहर घूम रहा होगा, निर्दोष अंदर बैठा होगा जेल में, तो समाज में बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम 2047 में भारत को जुडिशियल सिस्टम के मामले में वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, जुडिशियल सिस्टम के मामले में हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो हमें तत्काल बिना देरी किए भारत में इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम शुरू करना चाहिए। जजों के लिए एक अपॉइंटमेंट एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए। जब टीचर्स के लिए हमने सीटेट लागू कर दिया, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेंट्रल लेवल पे, वेंकटेश जी, वी कैन अडॉप्ट दिस आईजीएस आल्सो, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है। हमारा संविधान कहता है कि आईएएस की तरीके आईजीएस होना चाहिए इंडियन जुडिशियल, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। अभी कुछ वर्तमान सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, उस पर काम भी चल रहा है, मेरी पीआईएल भी चल रही है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसमें बहुत शीघ्रता करने की जरूरत है। इसमें लंबा समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जजों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे ऐसे लोग भी जज बन रहे हैं जिनको खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं उनको नहीं पता, आईपीसी में कितनी धाराएं हैं उनको नहीं पता है, वो जज बन रहे हैं। मुझे लगता है उसको बंद करना चाहिए। दूसरा, तीसरा एम कौन? जुडिशरी में पहला एम हो गया जज, दूसरा हो गया एडवोकेट। एडवोकेट की क्वालिटी एक जैसी हो, उस पर काफी काम हुआ है। क्लैट का कॉमन एग्जाम शुरू हो गया। क्लैट जो अभी लॉ का सिलेबस भी पूरे देश में हो चुका है, लेकिन अभी भी हम जो पढ़ा रहे हैं वो रट्टा मार पढ़ा रहे हैं। रट्टा मार समझते हैं आप लोग? हाँ, हम क्या कर रहे हैं, आईपीसी में किडनैपिंग में सेक्शन 363 में 7 साल की सजा होगी, ये पढ़ा दे रहे हैं बच्चे को। लेकिन ये बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं कि 7 ही होनी चाहिए, थोड़ी कम भी होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, और 7 क्यों होनी चाहिए, 10 क्यों नहीं होनी चाहिए, या 20 क्यों होनी चाहिए, या 5 क्यों नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने लॉ स्टूडेंट्स को वो रट्टा दे रहे हैं, आईपीसी पढ़ लो, सीआरपीसी पढ़ लो, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, बस पढ़ लो, बस रट लो, दिमाग मत लगाओ। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, ये अमेरिका में चलता है। जैसे अपने यहाँ आईपीसी चलती है, इंडियन पिनल कोड, ऐसे अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है। क्राइम हमारे यहां ज्यादा है, पॉपुलेशन हमारे यहां ज्यादा है। हमारे आईपीसी में मैकाले ने 23 चैप्टर बनाया था, 23 चैप्टर मैकाले ने बनाया था, आज भी वो 23 चैप्टर है। एक चैप्टर हमने पिछले 75 साल में उसमें जोड़ के 24 चैप्टर नहीं किया। बोले मैकाले गुरु जो दे गए बस उसी पर कंटिन्यू रखेंगे हम। हाँ, ना 22 किया ना 24 किया। मैकाले 23 दे के गए थे, बोले 23 ही रखेंगे क्योंकि मैकाले दे गए। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है। कितने? 123। इंडियन पिनल कोड में 23 और अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में 123। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि हमारे यहां मर्डर की एक धारा है 302, वो कैसे भी मार दे, गला दबा के मार दे, टुकड़े टुकड़े करके मार दे, 35 टुकड़े कर दे, 60 टुकड़े कर दे, गाड़ी से घसीट के मार दे, गोली से मार दे, जैसे मार दे। बोले मैकाले ने बोला था एक ही धारा रहेगी 302, तो एक ही 302 रहेगी। अमेरिकन फेडरल पिनल कोड में मर्डर का पूरा चैप्टर है, हमारे यहां धारा है, यहां चैप्टर है, और 10 तरीके के मर्डर को डिफाइन किया है। बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, किलिंग अलग, मर्डर अलग, जेनोसाइड अलग, हेट क्राइम अलग, टेररिज्म अलग, 10 तरीके के डिफाइन किया हुआ है। तो फायदा क्या हुआ? चूंकि हमारे यहां एक ही धारा है 302, तो जज जैसा चाहे वैसा उसका इंटरप्रिटेशन कर ले। वो आजीवन कारावास दे दे, वो लाइफ दे दे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, रेयर मान ले, नॉर्मल मान ले, जैसे मानना है मान ले, और 30 साल बाद,
14 साल बाद, अच्छा 30 साल के बाद, और 30 साल के बाद छोड़ भी दे। हाँ, और फेडरल पिनल कोड में चूंकि मर्डर स्पेशली डिफाइंड है, तो न जज चाह के भी कुछ कर सकता है और बड़े बड़े वकील चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब आप सोचो, भारत जिसने अग्नि मिसाइल बना लिया, बड़े बड़े हाईवे बना लिए, एयरपोर्ट बना लिए, हर फील्ड में हम आगे गए, हमने कभी ये फेडरल पिनल कोड पढ़ा नहीं, देखा नहीं। हुआ क्या, हमारे माननीय सांसदों को जब अपना घर बनाना होता है तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं। अपना घर बनाना होता है तो 10 घर को फिजिकली जाके देख के आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो घर बने वो उन 10 से अच्छा बने। इसलिए किसी एक घर के ड्राइंग रूम की कॉपी करेंगे, किसी के बेडरूम की कॉपी करेंगे, किसी किचन की कॉपी करेंगे। लेकिन जब देश के लिए कानून बनाना होता है तब जाके नहीं देखे कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, दुबई में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले 20 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, 20 देशों का, और 10 देशों के संविधान को तो अडॉप्ट भी किया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिया, अमेरिका का लिया, आयरलैंड का लिया, रूस का लिया, साउथ अफ्रीका का लिया, जहां से जो अच्छा लगा उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद हमने इस प्रैक्टिस को कभी अपनाया ही नहीं। ना हमने अपनी जड़ को देखा कि हमारे 1000 साल पहले क्या चल रहा था, 500 साल, 800 साल, 900 साल पहले क्या चल रहा था। न वर्तमान को देखा कि आज के रेट में बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आखिर वो क्या चल रहा है। तो हमने एज इट इज रखा। नतीजा ये हुआ कि जितने भी देश के लिए दीमक हैं वो दीमक एज इट इज रहे, जितनी समस्याएं थी वो एज इट इज रहीं। न घूसखोरी कम हुई, न जमाखोरी कम हुई, न मिलावटखोरी कम हुई, न कालाबाजारी कम हुई, न नफा तस्करी कम हुई, न मानव तस्करी कम हुई, न सोना तस्करी, कुछ भी कम नहीं हुआ। वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। वर्तमान सरकार ने लगभग 1500 कानूनों को खत्म किया। इसके अलावा कमेटी भी बनाई है। वो कमेटी आईपीसी को रिव्यू कर रही है जो मैकाले ने बनाया था, और एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि मैन ठीक हो जाए। मैन ठीक करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, न्यायपालिका के लिए केवल जज का अच्छा होना जरूरी नहीं है, न्यायपालिका के लिए पुलिस का अच्छा होना भी जरूरी है। सीधा सीधा संबंध होता है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम की शुरुआत थाने से होती है। जब आप जाके मुकदमे में शिकायत दर्ज करते हैं वहां से न्याय शुरू होता है। फिर वो सब इंस्पेक्टर कैसी रिपोर्ट बनाएगा, कैसी चार्जशीट बनाएगा, उसका सीधे सीधे आपके जस्टिस से रिलेशन होता है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसी बात सुनते हैं। एक बात जो मेरे मन में, चूंकि 2047 के विजन की बात हो रही है, जब हम घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं। घर की दीवार की फाउंडेशन 24 इंच की होती है, थोड़ा ऊपर आते हैं तो फिर 18 इंच की दीवार, थोड़ा ऊपर आते हैं तो 12 इंच की दीवार, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो 6 इंच की दीवार, ऐसे करते हैं। हमारा वर्तमान जस्टिस सिस्टम ठीक उसका उल्टा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज मुकदमे का फैसला करते हैं, हाई कोर्ट के 2 जज उस जज की जजमेंट को देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज उस जजमेंट को आके देखते हैं। सबसे कम एक्सपर्ट कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, जो पहला हमारा जजमेंट देने वाला है। उसके जजमेंट को रिव्यू करने वाले हाई कोर्ट के 2 जज, उससे भी ज्यादा समझदार। उसके जजमेंट को रिव्यू करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 जज, जो उससे भी समझदार। इस सिस्टम को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत मत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे कम से कम एक डिवीजन बेंच होनी चाहिए। एक सिविल के केसेस के लिए भी एक डिवीजन बेंच हो, एक क्रिमिनल के केस के लिए भी डिवीजन बेंच हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जो बेचारा विक्टिम है वो उसकी पहुंच में होता है। हाई कोर्ट जाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। हाई कोर्ट तो कुछ लोगों के लिए 400 किलोमीटर होता है, कुछ लोगों के लिए 500 किलोमीटर होता है, और सुप्रीम कोर्ट तो कुछ लोगों के लिए 3000 किलोमीटर भी है। जो कन्याकुमारी से आएगा या आपके रामेश्वरम से आएगा उसके लिए तो 3000 किलोमीटर है।
तो उसके लिए, लेकिन रामेश्वरम में अगर उसको जजमेंट अच्छा हो जाए, सेटिस्फैक्टरी जजमेंट हो जाए। दूसरा, एक अगर हम ये प्रोसेस शुरू करें कि जो गलत मुकदमा चलाएगा, अल्टीमेटली जब जज कह रहा है कि पूरा मुकदमा गलत है, ये फेक है, ये फॉल्स है, और फिर कोई पनिशमेंट नहीं हुआ, तो मुकदमा कम कैसे होगा? जब तक हम ये पनिशमेंट सिस्टम शुरू नहीं करेंगे, जब हमें पता लग गया कि एक व्यक्ति ने जानबूझ के दूसरे को परेशान किया है, और परेशान केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परेशान किया, हाई कोर्ट में परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट तक आया हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी के घर पे कब्जा किया, कब्जा करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हार गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी हार गया, सुप्रीम कोर्ट भी हार गया, तो हारा कहां? वो तो जीता। 30 साल उसने उसके घर को यूज किया। अगर उसके लिए कुछ पनिशमेंट नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि फिर इसलिए एक कंपनसेशन सिस्टम हमें एक शुरू करना पड़ेगा अगर हम जुडिशरी सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं। मेथड बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम आज भी 150 साल पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो मैन के साथ साथ मेथड को जरूर बदलने की जरूरत है। मटेरियल कौन ले आता है? लोग, लेखपाल, अमीन, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, ये मटेरियल इकट्ठा करते हैं जस्टिस सिस्टम के लिए। उसके लिए हमें कुछ अच्छा उनके लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है टेक्नोलॉजी, हमें थोड़ी मनी खर्च करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें, मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक एयरपोर्ट बनाने में भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, और 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे तो इस देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। जब तक हम मॉडर्नाइज नहीं करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को, तब तक लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल आपको बदलना पड़ेगा, वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून 1950 के पहले के सारे बदलने पड़ेंगे। अंग्रेजी कानून एक भी चलने वाले नहीं आज के डेट में, और जो अंग्रेजी कानून भारत में चल रहे हैं, इनफैक्ट ये यूके में भी नहीं चल रहे हैं। मैकाले जो कानून यहां दे के गया है, वो यूके वाले भी नहीं यूज करते, हम ही यूज कर रहे हैं उसको। तो कानून, मेथड, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि अब मैं अपने वेंकटेश जी से कहूंगा कि अगर आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ाएं इस बात को। With the permission of the audience, I'll speak in English. Not that I can't speak in Hindi, but I'll make my points more eloquently in English. First, let me thank the organizers for inviting me to the Surat city. And I'm conscious that I'm in the diamond capital of the world. When I told this to my wife, she asked me whether diamonds are cheaper in Surat. I said yes. So she said, why don't you get a kilo of it? After a scholarly presentation by Ashwani ji and a sagacious presentation by Justice Gogi, I'll pick up on what a good friend Ashwani ji said just now. Inadvertently, he said something very profound. He says, delete all the laws, abrogate all the laws prior to 1950. Note this date, 1950. And the Constitution was adopted on 26th November 1949. My humble suggestion is, begin with the Constitution, because unless you start rewriting the Constitution de novo, judicial reforms cannot be achieved. Judicial system is a byproduct of your Constitution. And the Constitution is basically a byproduct of Christendom and the Western world. You can have n number of objections to Macaulay, IPC, CRPC, CPC, everything, Evidence Act, everything. Everything is sanctified by the Constitution. Now let me give you a simple example. There is a UN and there is a Security Council in the UN. There are 5 members, permanent members of the UN Security Council. Britain, America, France, Russia and China. Of these 4 are European powers. Of this, Britain in 1642, America in 1776, France in 1789, China in 1949,
Russia in 1917 underwent bloody revolutions. So unless you are a bloody, have a bloody past, you can't have a permanent Security Council membership. Now, what was the revolution all about? Revolution all about was about liberty of the individual and to organize the state and to set the equation between the individual liberty and the state. मोटे तौर पे इससे ज़्यादा revolution कहीं नहीं थी. So, in our understanding, the French Revolution is equal to the British Revolution, is equal to the American Revolution, is equal to the French Revolution, is equal to the Russian, is equal to the Chinese. But you will be surprised. जैसे आपने बोला कि 20 constitutions हमने लिया पढ़ा और 10 constitutions हमने लिया. What we did, we took the head of the giraffe, we took the tail of a monkey, then we took the trunk of an elephant, then we took the hair of a lion and said we have created a constitution. It was the first. Microsoft did not bring in cut and paste. Our constitution founding members did the original cut and paste. Look at France, look at Ireland, look at Canada, look at Italy. I don't know why Italy in those times. I can understand Italy now. But Italy then, somebody had such clairvoyance to look at Italy. Now, what is this all about? The Justice Krishna here, who is one of our greatest judges of Supreme Court, observed that our jurisprudence is fertilized more by the Thames than the Potomac. उनकी अंग्रेजी लिखने का एक अलग ही एक अंदाज था. What it means is Thames flows through the London and Potomac flows through Washington. He says we are more British in our jurisprudence than American. But look at what I find, that between the French Revolution and the American Revolution, there is too much of discrepancy. The French talk about equality, fraternity, and equality, fraternity, and one more thing that they talk about, liberty. Liberty is the least one of it. And Americans talk about liberty much more than anything else. To them, fraternity, social justice, ये सब इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है. So the American Constitution or American conception of the state is to protect the individual from the state. In French, they don't care about it. They say equality is much more important than liberty. But we have taken liberty, equality, fraternity and put it into the preamble. We have taken we the people from the American Constitution, put it into the preamble. So whiskey and lassi has been mixed. Those who drink whiskey know what is the problem of drinking with lassi. Now, there is something more important. Just I am supplementing. कुछ बातें जो मैं हिंदी में नहीं कह पाता हूँ उसको वेंकटेश जी इंग्लिश में कह रहे हैं. ना विस्की लस्सी कोई भी भाषा में सब समझता है सर. अभी 6 बज गए हैं, सबको समझ में आ रही है. There is one interesting book by Os Guinness, and there he says, unlike the English and the American Revolution that were rooted in the Bible, the French, Russian and the Chinese revolutions were rooted in the French Enlightenment. The last 3 revolutions are overtly anti-biblical, anti-religious, anti-Christian, and their overall record on freedom has been dismal. Far from ushering a final form of freedom and representing a second coming of Epicurus, their claim to be true and reliable source of human freedom has been left in the tatters by the history of the repressive secularist regimes in the 20th century and the slaughter of millions of their own citizens. Now the problem is, if we say we are with the American and the British, we are biblical. We follow Christendom. We follow Christianity. If we say, no, we borrow from the French, Russian and the Chinese, we are anti-biblical and we stand for tyranny. Damned if you do, doomed if you don't. It is a very peculiar situation. And there was an English, not an English, he was an American,
Jew who came to India in 1956. He wrote a book on Lokmanya Tilak and talks about Swaraj. And in 1956, he says, you had a compulsion to write this constitution of a cut copy paste from various parts of the world. There is nothing Indian about it. It is the most un-Indian constitution. And the un-Indian constitution, you are right, that even today we follow it in all the laws, and you very rightly said that there was a punishment for Savarkarji, there was a punishment for Rajguru and so many other people that you listed. Why? Because the Constitution of India was nothing but a rehash of the 1935 Government of India Act. And Government of India Act is nothing but a rehash of the 1919 Government of India Act. It is like taking a Hollywood movie and plucking in a mother and sister character and saying it has become a Bollywood movie. Usually Bollywood movie में माँ बहन की character नहीं आती, गाली आती है लेकिन माँ बहन की character नहीं आती. लेकिन इधर में आपने कुछ घुसेड़ दिया और बोल दिया कि ये बॉलीवुड मूवी है. And this is how the constitution has been made. So your judicial reforms has to begin with basically rewriting the constitution de novo. And when I say de novo, you have to start by saying India is a dharmic civilization state. Two, you will not talk about it in English. You will talk about it in Gujarati, Tamil, Bengali, any Indian language, but you should not speak and write about it in English. Three, it should not be left to lawyers like Upadhyay ji or myself. You should have scholars in constitution writing. Now I'll give you an example why it should be written in Matrabhasha. Let us take 15th of August 1947. All of us have seen this repeatedly whenever we went to movies in our early times. Long ago when we made a tryst with destiny, Panditji comes and a grainy footage comes in newsreel. And he says, a moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when the old age ends, when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. I went to Discovery of India. I saw how much does he believe in the soul of India. How much he believes in the soul. Please do a fact check right now. Nehruji says, I don't believe in the soul. He doesn't believe in the soul in the Discovery of India, but to ornament this speech in 1947, he begins with the soul. Actually, if you are really believing in the soul, you should say, भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए. शायद मेरी हिंदी इतनी बुरी नहीं है. हाँ, he has validated it. Otherwise, he will go on a PIL tomorrow. The point I'm making is, your soul in English is not equal to Atma in Indian language. Soul comes from the book Republic written by Plato. And Plato talks about reason, appetite and will that goes about making the soul. For us, there is no ingredient. You have to read chapter 2 of Bhagavad Gita. Water cannot wet me, fire cannot burn me, weapons cannot cut me, wind cannot dry me. I am the immortal soul. Chapter 2:23, if I am right. But Nehru borrows this from Plato. How did I know? There was one gentleman who wrote in the Hindu that Nehru studied 55 books between 1922 and 23 when he was in the prison. And one of them happens to be Plato's Republic. He has listed it. So you are so deracinated that you talk about a soul which is not equivalent to our Atma. So the first sentence itself is completely delinked from our civilizational moorings. I'll give you 2 examples because I think I'm running out, and it is live examples. I stood up in the court challenging appointment of Archakas in Madras High Court. So I had to talk about the Agama Shastra. Agama Shastra is the constitution of maintaining, creating, running temples. If this land can have a temple or not will be decided by the Agama Shastra. Where will the idols face? Some idols face north, some idols murtis face east,
some face west, some face south. Each temple has its own agamas. After speaking for 15 minutes on 26 Shaiva agama, 2 on Vaishnava agama, the Lordship asked me, what is agama? I said, how do I explain what is agama in a court? Can you do it, sir? It's very difficult. But without knowing agama, how can I debate on a subject? Now, this is where we are civilizationally challenged. That you are looking at Article 25 and 26, which talks about denomination, does not understand the word denomination cannot apply to Hindus. You may be a Vaishnavite, I may be a Shivite. And in Chidambaram temple, the Nataraja is there and Lord Govinda Swami is here. Those who have seen Dasavataram will know this. And when you go to Nataraja temple, we bow to Shiva, we bow to Vishnu. Both of them are not two different denominations. But a Lutheran church is different from a Baptist, which is different from Catholic, which is different from Protestant. So it is one currency, different denominations. We are different currencies accepted by all. We are a global exchange in religion. So to me, to go to a Amritsar and wear a headscarf as I enter in all reverence to a Sikh shrine is as important as I go to Tirupati and tonsure my head. Both are acceptable to me. Our word is not, the word is tolerance. We accept. Tolerance is a pejorative term, an unacceptable term. It's an English term. I tolerate somebody because the next fellow is a drunkard and sitting next to me on a plane. I tolerate him because do ghante ke liye mujhe tolerate karna hai. But when I accept somebody, it is like I accept my parents what they are. I accept my son what he is. I accept my neighbors. I accept my friends. I accept my relatives. Now the next one, I think this is the most horrendous decision in the history of Supreme Court. It is the Sabarimala judgment. Now, I will tell you, it will take 5 minutes, sir. I hope I have time. We observe 42 days Vrat. Prichne illa, sir. Huh? Prichne illa, 5 minutes. Okay, thanks for your Tamil. When we do this 42-day Vrat, ladies have their own biological problems. At that time, whether it is my domestic help, my wife, sister, in my office, when they know I am wearing my Sabarimala Vrat, ladies keep away from contacting us or talking to us. That is the level of reverence to a person who goes to Sabarimala. And when I go to Sabarimala, there may be elders who are not in that Vrat. They fall at my feet because they think I am Lord Ayappa. And ladies come to the station to see us off, and we put that irumudi on. It is so much of a joy to see that ladies come, sisters, brother, wife of respective Ayappas who go, and we address each other as Ayappa. Suddenly we brought in constitutional morality. And constitutional morality over and all civilizational sensibilities. And who are the people who wanted to go to Sabarimala are people who don't believe in Sabarimala. And Supreme Court had the temerity to say that we will have to override all your civilizational sensibilities with Article 14. I can't believe that they did this to us. It cannot happen to any other country, any other race, or any other denomination, if I have to use the word denomination. My barber who died during this COVID issues, told me at that time, said, sir, I live in a 300 square feet area. We have a puja shelf. For 3 days in a month, my wife doesn't go to that corner because of biological reasons. Will your judges not understand this simple sensibility? Asked me. I have no answer for this. I think we are a civilization which is suffering from what I call as paraskividika triophobia. It is fear of Friday the 13th. Friday the 13th is when Pandit Nehru brought in the
aims and objectives resolution in the parliament, 13th December, it was a Friday, 1946. On that day, he introduced secularism. On that day, he introduced socialism. In the aims and objectives resolution, Pandit Nehru says, believe me, we are in 1946, December, when partition ki baat nahi ho rahi hai, vibhajan ki baat nahi ho rahi hai. The fifth point, he says, we will have to safeguard the interest of the minorities. And he says we will have to bring in socialism, 1946. And we have to bring in socialism. And both these concepts are arising from the French Revolution, and both of them are antithesis to our civilization. They are Christendom at best. They are nothing to do with Hindu civilization. So in 2047, 25 years from now, at least I have taken a vow that I will work for a new constitution of this country. Come what may, whether you file a PAL or not. With me, without me, with government, without government, we will go ahead and do it. And this I went to Sabarimala this 31st December, and I was there on the first morning. And I have asked Ayappa to give me all the blessings that we should by 2047 get a civilizationally endowed constitution, a constitution which is linked to our civilization. मैं वेंकटेश जी को सप्लीमेंट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं जिन कुर्सियों पे, उन कुर्सियों पे लिखा है ये तो धर्मस्ततो जय। हर सुप्रीम कोर्ट की दीवार पे भी सामने लिखा रहता है ये तो धर्मस्ततो जय। और हम कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश। कुर्सी पे लिखा है तो धर्मस्ततो जय, और हम कहते हैं भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरा, पूरा हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ था वंदे मातरम से। राम राज्य was always spoken till 1945 or 46. Yes, exactly. I am coming same. पूरा का पूरा हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला वंदे मातरम भारत माता की जय। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, इसकी अंतिम जो मीटिंग हुई 26 जनवरी को, तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को फाइनल मीटिंग हुई। ये हुआ भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हो गया, भारत का नेशनल एंथम क्या होगा? तो लोगों ने कहा नेशनल एंथम क्या होगा? वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम हुआ क्या था? अंग्रेजों ने एक बार यहां पे थोपने की कोशिश किया गॉड सेव क्वीन। उन्होंने नेशनल एंथम बनाया गॉड सेव क्वीन, उसको भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया। उसको रिवर्ट करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। और वंदे मातरम, चूंकि पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से मैगजीन निकलती थी, सारा कुछ वंदे मातरम से होता था। और इवन जो पहला भारत का फ्लैग डिजाइन हुआ था उसमें भी बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये गोल सर्किल नहीं था, पहले वंदे मातरम लिखा हुआ था। लेकिन चाचा जी को पता नहीं कहां से एकदम आया ख्याल, और कांग्रेस का अधिवेशन भी वंदे मातरम से होता था। फर्स्ट 5 कांग्रेस मीटिंग, जो एनुअल कांग्रेस की बैठक थी, वो वंदे मातरम से हुई थी। और उसमें 2 बार तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम गाया था। जो जिन्होंने जनगण मन लिखा है वो खुद वंदे मातरम गाए थे कांग्रेस के अधिवेशन में 2 बार। लेकिन 24 जनवरी को एकाएक पता नहीं कहां से उनको क्या आया, उन्होंने अपना वीटो लगाया, क्या लगाया, बोले नहीं जनगण मन होना चाहिए। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने बीच का रास्ता निकाला, बोले नहीं एक काम करते हैं जनगण मन वंदे मातरम दोनों ही। तो एक्चुअली टेक्निकली देखें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, डिबेट के हिसाब से, तो हमारे 2 राष्ट्रगान हैं। वी हैव 2 नेशनल एंथम्स, जनगण मन एज वेल एज अ वंदे मातरम। लेकिन बाद में 1973 में जब कानून बना तो उन्होंने क्या किया कि वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया नेशनल ऑनर एक्ट में। सो अभी मेरी PIL चल रही है वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान का दर्जा दिलाने के लिए, वो चल रही है। और राष्ट्रगान नेशनल एंथम, देश का ही विभाजन नहीं हुआ, राष्ट्रगान का भी विभाजन हो गया। और 2 first 2 stanzas are sung at every parliament session at the fag end when hardly there are 5 members of parliament. Yes. Just 2 stanzas are sung. Now coming, can I finish my last? So the problem is that you have a Christian idea of India which is running even today. I have nothing against Christianity or biblical thoughts.
but we are taking the Christian soul and not the Indian Atma, which are two different concepts. And that is why we are getting into all these problems. We are still not yet decided who are we. We think that we have nothing to do with the ancient Bharat. We are the only country, probably, I studied all the constitutions from the internet, but nobody has got two names, except India, which Article 1 says, India, that is Bharat. Actually, it should be like saying Raju alias Rajkumar. You know? We are the only country, and when we become Bharatiya, we are civilizationally connected. When we are Indians, we become either an appellant or a defendant in a court. So, the point I'm making here is that India needs to be civilizationally connected, and more civilizationally connected through the constitution. I think probably we will have judicial reforms as a set of the legal reforms, and legal reforms will be a subset of the constitutional reforms. And the best way to start reforms is to demolishing the whole thing and start building it afresh. 25 years, I think by 2047, we will be 100th year of the constitution. I think we can present ourselves to the next generation at least a bigger, better, not in terms of words, but in thought. I think a constitution should not be more than 8 years. And Prime Minister also said in one speech that every law must come with a closure date, that it should come with a self-destruct program. The constitution also must come with a self-destruct program of 100 years. 100 years ke baad, you write a new constitution for the new 3 generations. No problem, have your own house, your own way of doing things. But don't, for heaven's sake, this scourge of socialism and secularism be continued for the next 100 years. We have to put an end to this nonsense forthwith. वेंकटेश अय्या रुम ननरी, अश्विनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आई थिंक यही खासियत है गुजरात लिटरेरी फेस्ट की कि विषय इतने रोचक है कि हमारा मन ही नहीं भरता है और समय कब समाप्त हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है. और एज नागरिक हम ये सोचते हैं कि जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, ये तो वकीलों के लिए है, जज के लिए है. लेकिन आज का जो हमारा सत्र है हमें यही सिखाता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज नागरिक, हमें भी हर ये जो हमारा जुडिशरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें इसके बारे में उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है.